Okay, beta. Hello, good afternoon, everyone. So today we will start with a new topic and we will ask ourselves an important question. What is the use of symbol in maths? इसमें I will talk about many things today. सबसे पहले हम कुछ symbols के बारे में बात करेंगे. Then we will talk about the difference between an equation and identity. What is the difference between equation and identity? And I will also go ahead and talk about what is the difference between parameter and variable. What is the difference between parameter and variable? So we will go ahead and we will try to cover all these concepts today. Let's start. First of all, let us talk about what is a logical constant. एक logical constant किसको बोलते हैं? All the numbers that we write, 4, 5, 7, -2, -6, whether they are, we will be talking about this in the next class. कि what is a real number, what is a rational number, what is an irrational number. I will talk about that. इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे. But अभी के लिए बस ऐसे ही समझ लो that any number that I write down, rational, irrational, anything that I write down, that is called as a logical constant. So 3 is also a logical constant. -4 भी logical constant है. 2/3 भी logical constant है. √2 भी logical constant है. Pi भी logical constant है, and so on and so forth. So any number I write down, rational or irrational or any real number, कुछ भी आप लिख रहे हो, the numbers you are writing down, whole number, natural number, कुछ भी लिख रहे हो. What are these things? I will talk about that also in the next class. अगली class पूरा इसी पर ही है कि what is a real number, what is a natural number, what is an irrational number. But as of now, any number that you write down, जो भी आप number लिखते हो, that is called as a logical constant. Now, the next thing that we need to go ahead and we need to ask ourselves, what is a variable? Variable comes from the word varies. Varies means changes. Anything that changes, जिसका value हम change कर सकते हैं, anything that varies is called as a variable. Just for example, a variable is represented by small letter. I can say that x is a variable such that x is equal to 1. Y is a variable such that y is equal to 4. I can also change the value. I can say x is a variable such that x is 2. I can vary the value of x. X का value change हो सकता है. Also, the value of x can keep changing as you solve different equations. जैसे for example, if I say 2x is equal to x plus 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x minus x is equal to 2, x is equal to 2. तो this equation says that the value of x is 2. यहाँ से हमारे पास x का value 2 आ गया. But when I will be going ahead and I will be writing this, x minus 4 is equal to 7. तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा, x is equal to 7 plus 4, which is equal to 11. So try to understand that the value of x keeps changing. X का value change होता जा रहा है. The value of x is changing. And therefore, क्योंकि उसका value change हो रहा है, we will say that x is a variable. It depends on which equation you are solving. कौन सा equation आप solve कर रहे हो, x का value accordingly ही होगा. Right? So by variable, we mean it is not a fixed value. If the value keeps on changing, अगर किसी भी चीज का value change होता जाता है, we go ahead and we call it as a variable. Right? So we can have x as 1, x as 2, x as 4, and so on and so forth. But the next thing that we need to go ahead and we need to focus on, वो है identity and equation. This is such an important topic, identity and equation, that you cannot believe that this also comes in entrance exams of MA. Masters के entrance exam में भी identity and equation के ऊपर there is a question.
right? I remember there was a question on which of the following is an identity. 4 equations were given to you, or it came in CVT exam of 2023. So it's such an important topic कि it can come in the entrance exams also. ये entrance exam में भी आता है. So let us try to understand. First of all, let us try to understand the concept of equation. Beta, equation means it is coming from the word equate, means equal. So an equation is anything where we equate left hand side and right hand side. जहां पे भी हम दो चीजों को equate करते हैं, left hand side को और right hand side को, that becomes an equation. For example, अगर मैं बोलूं x plus 5 is equal to 2x minus 3, then this is an equation. There is a left hand side, there is a right hand side, and I am equating the two. मैं इन दोनों को equal कर रही हूं, right? So wherever we go ahead and we equate, हम right hand side और left hand side को equal करते हैं, that is called as an equation. उसको हम equation बोल देते हैं. Am I clear with it? So wherever we are equating the two, it's an equation. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Identity is a form of equation, but it is always true. एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा सच होगी for any value of x and y, that becomes an identity. Let me give you an example. जैसे बेटा, take this equation. ये इक्वेशन सिर्फ तब ट्रू होगी when the value of x is 8. अगर हम x को 8 डाल देते हैं, if I put x as 8, my left hand side will come out as 8 plus 5, 13. And my right hand side will come out as 2 into 8 minus 3, 16 minus 3, 13. समझे? तो left hand side will become equal to right hand side in this case only when the value of x is 8. Other than this, अगर इसके अलावा आप कुछ भी डालोगे, you put in anything, x equal to 1, x equal to 2, x equal to 7, x equal to 9, it will not be true. So this is just an equation. ये हर x, y के लिए true नहीं है. It is only true for one particular value of x. ये सिर्फ x equal to 8 के लिए true है. It is only true when x is equal to 8. Otherwise, it is not true. So this is an equation. But tell me something. अगर मैं ये लिखती हूँ कि x plus y into x minus y is equal to x square minus y square, तो ये हमेशा ट्रू है. You put any value of x, you put any value of y, this is always true. Take an example बेटा. जैसे I will put x as 4, y as 1. तो 4 plus 1, 4 minus 1 equal to 4 square minus 1 square. ये हो जाएगा 5 into 3, 16 minus 1, 15 equal to 15. अब अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, if I change x to 2, तो यहां पर I will have 2, 2, 3 into 1, 3, और यहां पर मेरे पास हो जाएगा 2 square, 4 and 3. तो whatever value of x and y you put, कुछ भी डाल लो x और y में, it will always be true. वो हमेशा ही true होगा. So something that holds true always, जो चीज हमेशा true होती है, that is basically an identity for any value of x and y. So it becomes an identity. An identity is represented using 3 equal to sign. समझ लो? तो यहां पर ये सिर्फ x equal to 8 के लिए ट्रू था, ये इक्वेशन.
पर एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी एक्स वाई की वैल्यू के लिए ट्रू है, ऐसी इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी। ठीक है बेटा। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 ये एक इक्वेशन है। अगर मैं x को 2 और y को 1 रखूंगी तो दिस विल नॉट बी ट्रू। तो इट डज नॉट होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। ऐसा नहीं है कि कुछ भी x y डाल दो और चल जाएगा। बट x प्लस वाई होल स्क्वायर is equal to x square plus y square plus 2xy. This is always true. ये हमेशा true होगा। तो anything that is always true, जो हमेशा true रहता है, that is called as an identity. Identity is represented using 3 lines. Clear? अच्छा, now let us talk about another example. X square plus x minus 12 is equal to 0. अब ये सिर्फ तब ट्रू होगा when x is 3 और x is minus 4. Again, it is true only for 2 values of x. ऐसा नहीं x को कुछ भी डालो and it will be true. So this is an equation. Clear? ठीक है। तो by now बेटा we have studied the following. हमें ये समझ में आ गया कि एक वेरिएबल क्या है, और हमें ये पता चल गया कि what is an equation versus identity. इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है, वी हैव स्टडीड दैट। नाउ इसी में हम एक तीसरी चीज लेके आते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल इज नथिंग, a variable used in economics becomes an economic variable. So anything in economics that keeps changing its value, like employment rate, हाँ, हर सिटी का employment rate will be different. Every state employment rate will be different. So anything that keeps changing its value but is an economic term, employment rate macroeconomics में use होता है, unemployment rate macroeconomics में use होता है, inflation rate macroeconomics में use होता है, right? So anything which is used in economics but keeps changing, it's a variable, that is basically called as economic variable. उसको हम एक economic variable बोलते हैं। Is this clear? So an economic variable is any variable used in the field of economics. उसको हम economics में use कर रहे हैं। This is an ideal example. Employment represented by N is an economic variable. Okay, now just try to see the categorization of economic variable. तो क्या हो गया ना कि suppose मैंने employment को represent कर दिया N से, I have represented employment by N, और अब मुझे क्या करना है, I need to go and I need to excuse me, I need to go ahead and I need to create categories within employment. कि अच्छा, what is the employment in area 1, what is the employment in area 2, what is the employment in area 3, then I will use the subscripts. तो ये देख रहे हो, N1 represents the employment in area 1, N2 represents the employment in area 2, and so on and so forth. So when we use these subscripts, ये subscript हमें help करते हैं in the process of categorization. It helps us to go ahead and categorize a variable. ठीक है? Now what can happen? Suppose I need to go ahead and I need to do further categorization of the variable. Suppose मुझे ये करना है कि मुझे इस categorization को 1 level up करना है, ठीक है? तो I want to go ahead and I want to know कि कितना employment males में होगा in area 1. ठीक है? So employment is represented by N, area 1 and among males. तो when I need to go to one more level of categorization, अगर मुझे एक additional level of categorization का जरूरत होगा, if I need to do 2 levels of categorization, तो I can use subscript followed by a superscript. मैं ये दोनों ही चीजें एक साथ use कर सकती हूँ. I can go ahead and I can use a subscript followed by a superscript. Is this making sense? Clear? तो sometimes you need to create 2 levels of categorization, और जब भी हमें 2 levels of categorization करने होंगे, we will use subscript and superscript. This is an ideal example बेटा, जैसे I have used NIM.
तो ये हो गया आई रिप्रेजेंट्स ith एरिया। तो अगर मैं बोलूंगी N4M मतलब फोर्थ एरिया के मेल्स का एम्प्लॉयमेंट कितना। When I will say N10M, 10th area males employment how much, right? So employment in ith area among males. Similarly, if I say N15F, employment in 15th area among females is how much, right? So I am using two categorization levels, one area and second gender for employment. Okay, okay. Now similarly I have taken this example beta. So this is X1A. So 1 represents the month and A represents the individual and X represents the good. तो इंडिविजुअल ए का फर्स्ट मंथ में गुड एक्स का डिमांड कितना। सो इफ आई से Z5C, इट विल मीन दैट फिफ्थ मंथ में इंडिविजुअल सी का गुड Z का डिमांड कितना। सो आई एम क्रिएटिंग टू लेवल्स ऑफ कैटेगराइजेशन। सो दिस विल गो ahead and mean that in the fifth month demand of individual C of good Z, of good Z. Is this clear? ठीक है. Now let us go to the concept of variables and parameters. थोड़ा समझने की कोशिश करो. Parameters are constants of the model. And variables are those which vary in the model. जिनका value हम निकालते हैं, जो model to model change होते रहते हैं. Variables are a function of parameters. So if I will change parameter, तो variable will also change. जैसे for example, हम बात करेंगे consumption function की. In consumption function, we write C is equal to C bar plus small c y. है ना? But this small c, if you are not yet aware of it, इसको हम बोल देते हैं, this is called as autonomous consumption. ये वो consumption है, this is the consumption when income is zero. So if I will put y as 0, अगर मैं यहाँ पे 0 plug in करूँ, तो मेरे को consumption का value C bar मिलेगा. So when income is 0, the consumption level is C bar, and this is called as autonomous consumption. And this small c, this is called as marginal propensity to consume. क्या बोलते हैं इसको? It is called as marginal propensity to consume. तो marginal propensity to consume basically क्या है कि how consumption changes as income changes. जब income change होगा तो consumption कैसे change होगा? This is marginal propensity to consume. अब usually किसी भी मॉडल में ये दोनों चीजें हमारा फिक्स्ड रहेंगी. These will be fixed. Right? This will be given to you. जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि C is equal to 100 plus 0.9y. तो these are called as parameters. है ना? And we will want to go ahead and find out the equilibrium consumption and income. उस मॉडल के अंदर हमें consumption और income निकालने को होगा. So what we need to go ahead and what we need to find out, those will become my variables. Right? तो जैसे I go ahead and I tell you कि y is equal to c plus I, है ना? And c is equal to 400 plus 0.9 y, right? And investment is autonomous. Investment constant है. It is fixed at, again, suppose it is fixed at 500. So try to understand what I am doing in this question. See, these are constants, right? The value of investment is constant. तो ये investment को हम exogenous variable बोल सकते हैं. It is determined outside the model. ठीक है? ये देखो यहाँ पर. This is also 400. This is fixed. 0.9 fixed. These can also be exogenous or they are also called as parameters. ठीक है? तो we will use these two words interchangeably as of now. हमें एक्सोजेनस वेरिएबल और पैरामीटर में अभी के लिए डिफरेंस नहीं करना है. तो एनीथिंग दैट इज हेल्ड कांस्टेंट, जिसको भी हम फिक्स रखते हैं, उसको हम पैरामीटर
वो देते हैं, वी कॉल देम एज पैरामीटर। इज दिस थिंग एब्सोल्युटली क्लियर बेटा? इसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी। सो व्हाट वी हैव गॉन अहेड एंड डन देयरफॉर, आई एम सेइंग दैट आई बार इज पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर। अब क्योंकि ये पैरामीटर हैं, अगर मेरे को पैरामीटर क्या होगा, जिनका वैल्यू कांस्टेंट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस कि ये एक पैरामीटर है आई बार, 400 एक पैरामीटर है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, और ये एक पैरामीटर है रिप्रेजेंटेड बाय बी। ये एक जनरल केस हो गया, राइट? वहां पे मैंने नंबर्स दे दिए थे, आई हैड गिवन सम नंबर्स, फिक्स नंबर्स, एंड यहाँ पे मैं एक जनरल केस का बात कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज आई। Is this clear? Now what you can go ahead and do, you can say y is equal to c की जगह पे you can just plug this a plus by plus I bar. तो ये वाला चीज it can go here, 1 minus by is equal to a plus I bar, and y will be a upon 1 minus b plus I bar upon 1 minus b. तो now what we have done, हमने जो y की वैल्यू को सॉल्व किया है, we have solved the equilibrium level of y. इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आई गॉट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y एंड आई गॉट y एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। देखो राइट हैंड साइड पे जो भी हैं वो सारे पैरामीटर्स हैं, दीज आर ऑल पैरामीटर्स। सो आई हैव गॉट y एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसे जैसे हम इन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, इनको फ्लक्चुएट करते जाएंगे, y का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो अगर एक मॉडल में मुझे ये 100 दिया हुआ है और ये 0.9 पे फिक्स किया हुआ है, इफ दिस इज 100 एंड 0.9, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 है और ए 100 है, तो ये मॉडल ऐसे बन जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा। सपोज इन्वेस्टमेंट भी 100 दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। और दूसरे ही मॉडल में सपोज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू विल चेंज, ये 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 हो जाएगा। तो एज आई विल गो अहेड एंड आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ a, b एंड i, जैसे जैसे इन पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज होगा, हमारा जो वेरिएबल का आंसर आ रहा है दैट विल ऑल्सो गो अहेड एंड चेंज, right? So this is exactly what is written here. Let us try to analyze it better. So here I have mentioned that a and b are parameter. जैसे for example, if this is a consumption function, तो हमने इसको लिख दिया fixed के terms में कि c is equal to 200 plus 0.5y. तो 200 को a मान लो, b को 0.5 मान लो. These are your parameters, right? For any model, parameters are constant. Parameters को constant माना जाता है. And c and y are your variables. ये जो दिख रहे हैं, जो आप मॉडल के अंदर सॉल्व कर रहे हो ना, जिनकी वैल्यू के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, जो आपका इक्विलिब्रियम निकालने का कोशिश कर रहे हो, जिनके आंसर आप निकाल रहे हो, whatever you're solving for in the model, those are your variables. So whatever things you want to solve within the model, you want to find the value of c, y, these are your variables. Whatever are constants, those are your parameters. ठीक है? A model can be changed by changing the value of the parameter. तो अगर मेरा consumption function change हो जाएगा, if I change this to 300, this to 0.6 और 0.9, तो I will get different value of my variable. मेरा जो final answer निकलेगा that will also change. ठीक है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने के लिए. You may find this a bit difficult. कि मैम आप कह रहे हो पैरामीटर फिक्स्ड भी है, फिर पैरामीटर को हम चेंज भी कर रहे हैं ना. I am saying that parameter is a number, it is a fixed number. ठीक है, मैं एक मॉडल के अंदर अपने पैरामीटर को फिक्स करके चल रही हूँ कि इसका वैल्यू 200 है, इसका वैल्यू 0.5 है. बट आई एम सेइंग कि अगर इसका वैल्यू 200 की जगह कुछ और होता, तो मेरा जो वेरिएबल का आंसर आता वो भी चेंज हो जाता. सो वेरिएबल इज व्हाट यू डिटरमाइन विद इन द मॉडल. सो फॉर एग्जाम्पल, if I go ahead and I say कि x is equal to 2ab plus cx, so these are constants na, 2ab and c, these are your parameters and you are solving this equation for x. आप आंसर किस चीज का निकाल रहे हो इस इक्वेशन से? You are solving it for x, so your x is a variable. So whatever you solve for, जिसके लिए वो इक्वेशन सॉल्व की जाती है, that is a variable, and whatever is given to you, जो constants given है, that's a parameter. Right? Okay, beta. So parameters are given to you within the model. They are constants. A variable is determined outside the model and it may vary. ठीक है.
Now what I just want to go ahead and do at the end is I want to take an example from the book. ये example में it's a very easy example. Let us try to see example क्या बोल रहा है. It is based on the concept of variables. Similar concept पे ही ये based है, right? So this is example number 1.1, right? I really want all of you to follow this book along with me so that you don't leave out on anything. ठीक है? तो in this example 1.1 हम क्या बोल रहे हैं बेटा, that there is a farmer and this farmer has 1000 meters of fence wire which has to enclose a rectangle. तो imagine मेरे पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, और मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये वायर को मुझे इस रेक्टेंगल के अराउंड इनक्लोज करना है. आई नीड टू, यहां से वायर शुरू किया और इसको आई नीड टू जस्ट पुट दिस वायर एवरीवेयर अराउंड द रेक्टेंगल. ठीक है, सो इट इज सेइंग दैट देयर इज अ फार्मर. दिस फार्मर, इसके पास ये 1000 meters का फेंस वायर है and it need to go ahead and enclose this around this rectangle, right? Now it is saying that find the area enclosed, right? When you need to go ahead and choose x. X is the side of the rectangle, right? And you need to choose x from being 150, 250, 350 and do it for general also, general x also, and find that value of x जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा. ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें इस रेक्टेंगल को के आसपास वायर लगानी है. आई विल स्टार्ट, यहां से शुरू की वायर लगानी. पहली इसकी मैंने लेंथ को, सपोज दिस साइड इज लेंथ, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. ये है इसका ब्रेथ, ब्रेथ इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. फिर से एक्स वाई. तो जब मैंने ये वायर स्टार्ट की लगानी, व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग द वायर, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहले मैंने यहाँ पे एक्स मीटर यूज की होगी, आई वुड हैव यूज्ड एक्स मीटर हियर, देन आई वुड हैव यूज्ड वाई मीटर हियर, फिर से आई वुड हैव यूज्ड एक्स मीटर हियर एंड वाई मीटर हियर. सो व्हाट इज द टोटल वायर यूज्ड? Total wire used would have been x meter plus y meter plus x meter plus y meter, which is nothing but 2x plus 2y meter. माने the perimeter of the rectangle, पूरे rectangle को हमने cover किया. This is the total wire used. Now it says that I need to use how much wire, बेटा कितना wire use करना है? 1000 meter का wire है that I can go ahead and use. ठीक है, तो दिस हैज टू बी इक्वल टू 1000. ये सारा का सारा वायर यूज करना है. मुझे देखना है मैक्सिमम कितने बड़े रेक्टेंगल को मैं कवर कर सकती हूँ. तो देयर कैन बी अ स्मॉलर रेक्टेंगल ऑल्सो जिसको मैं कवर कर सकती हूँ, और थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल को भी मैं कवर कर सकती हूँ. सो आई नीड टू सी विच इज द बिगेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी कवर्ड, गिवन कि मेरा जो ये वायर का साइज है ये 1000 मीटर का है. आई हैव दिस वायर इक्वल टू 1000 मीटर. क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं रेक्टेंगल के अराउंड वायर कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. I don't know in numbers the length and breadth of the rectangle. अभी मुझे नहीं पता कि length क्या है, breadth क्या है. I am taking the length to be x and breadth to be y. So I start covering the rectangle. I start with covering x meter, then y meter, then x meter, then y meter. पूरा rectangle cover हो गया. Maximum मैं कितना ही cover कर सकती हूँ? 1000. This is the amount of wire I have. तो 2x plus y is equal to 1000. x plus y is equal to 5. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y is equal to 500 minus x. क्लियर? ठीक है, अब हम एरिया पे आते हैं. व्हाट, तो इट इज सेइंग कि किस तरीके से करोगे कि आप मैक्सिमम एरिया कवर कर पाओ. ठीक है, तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया दैट y is 500 minus x. What will be area बेटा? Area will be length into breadth. Length is x, breadth is 500 minus x. तो एरिया विल बी 500x minus x squared. आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस एरिया. मुझे इस एरिया को मैक्सिमम करना है. हाउ डू यू मैक्सिमाइज एनीथिंग? कैसे मैक्सिमम करते हो? यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. मिल जाएगा 500 minus 2x equal to 0. 500 is equal to 2x. x will be 250.
तो when the value of x is 250, जब x का वैल्यू 250 होगा तो जो हम एरिया कवर कर रहे होंगे वो मैक्सिमम होगा. बट when x is 250 तो y will also be 250, माने it will come out to be a square. तो अगर ये रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर होता है, वी विल बी कवरिंग द मैक्सिमम एरिया पॉसिबल. हम इसमें मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएंगे. ठीक है. बाकी द क्वेश्चन गोज अहेड एंड सेज कि फाइंड द एरिया विद 150, 250, 350. तो एरिया निकाल लो. एरिया का हमने फॉर्मूला क्या रखा है? एरिया इज x इंटू 500 माइनस एक्स. यही हमने एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ. x into 500 minus x. So you can just put the value. When x is 150, area will be 150. 500 minus 150. When x is 250, area will be 250. 500 minus 250. When x is 350, area will be 350. 500 minus 350. You can just find out these values. समझे? Is this question clear? तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 1000 मीटर का वायर है. आई हैव अ वायर ऑफ 1000 मीटर. आई हैव टू इनक्लोज द बिगेस्ट रेक्टेंगल पॉसिबल. जितना बड़ा रेक्टेंगल हो पाए उस पूरे रेक्टेंगल को कवर करना है. हमने रेक्टेंगल का लेंथ ले लिया x एंड आई हैव टेकन द ब्रेथ टू बी y. टोटल रेक्टेंगल कवर्ड विल बी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. So this will come out to be 2x plus 2y. एंड ये जो कवर हो रहा है, this has to be equal to 1000. Whatever you are covering, this has to be equal to 1000. तो यहां से आ जाएगा that x plus y should be equal to 500 and y will be 500 minus x. y का वैल्यू क्या आ जाएगा? It will come out to be 500 minus x. अब वो बोल रहा है कि जब आपने इस रेक्टेंगल को कवर कर लिया तो रेक्टेंगल का जो भी अंदर का एरिया है हमें उसे मैक्सिमम करना है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ की जगह पे आई विल पुट 500 minus x. So I will get the area of rectangle as x into 500 minus x or 500x minus x square. ये मेरा एरिया आ जाएगा. Now I just maximize this area. ठीक है जी. By doing first order condition. ठीक है. तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू 0 किया और x का वैल्यू 250 आ गया. ओके बेटा. So I will stop here for today. This was section 1.2. इस पूरे सेक्शन के जो आपके नोट्स हैं, those notes are available on our app. You can download ArthaPoint app और 8368663950 पे you can just contact Rohit sir and you can ask him to add you to this batch of maths. ठीक है, उनको बोल देना वो मैथ्स में ऐड कर देंगे आपको, मैथ्स बैच में. ओके बेटा, थैंक यू.